Okay, guys, so in this video, we're going to talk about market maker model. Basically, I'll give you intro about market maker model, and we will focus also on the failure swing topic basically. Okay, so let's put this here. So in beginning also, I said you guys in trading industry, you'll see same thing, same price pattern basically, I'll say, or same move with different name. Okay, so basically what is market maker model? It sounds very good, right? Market maker model बोलने में भी काफी अच्छा लगता है, but in reality it's nothing. It's just buy program and sell program. Okay, so इसका मतलब क्या? So as we know, in market we have bullish move, right? And in market we have bearish move, right? This is what we look for. Either we're looking for bullish move or either we're looking for bearish move, right? So when we're looking for the bullish move, okay, when we're looking for long, we in ICT we call this market maker buy model. Okay, we're looking for buy program basically. Okay, ऐसे को short form में you will see MMBM people say. Okay, same thing on opposite side. If you're looking for bearish move, if you're looking for downside, if you're looking for short, okay, you people will say this is market maker sell model. Okay, and this is going to be our sell program because we're looking for bearish move, right? And इसी को short form में MMSM बोलते हैं, ठीक है? तो है ये सिंपल चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, if you're looking for the bullish move, you will say I am bullish basically, right? And उसको complicate करने की इतना जरूरत नहीं है. Market maker buy model, market maker sell model, it's same thing, just a different name. Okay, ताकि थोड़ा अच्छा sound लगे. Okay, so I hope this is clear to you guys. So whenever we're going to look for long, okay, whenever we're going to look for bullish move, we will say we're looking for market maker buy model to play basically. And if we're looking for if we're looking for bearish move, we will say we're looking for market maker sell model. ठीक है? ये मार्केट मेकर मॉडल हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, सो डोंट वरी. So let's discuss about this failure swing, low resistance liquidity. Basically ये एक लिक्विडिटी है, जिसको मैं अभी पावर पॉइंट में समझाऊंगा अच्छे से, सो डोंट वरी. सो यू कैन सी माय पीपीटी पावर पॉइंट. ओके, सो वी गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ फेलियर स्विंग, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और इसी को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यू विल सी पीपल विल से either you can say failure swing or either you can say low resistance liquidity, or in short people will say LR basically. Okay, low resistance liquidity run basically. ठीक है? So again I'll say different name, but don't confuse मत होना. Okay, just remember always in end we have to understand where higher time frame is going, then we have to frame on lower time frame. Okay, so let me delete this and let's go to the next slide. So what is a failure swing? नाम से ही लग रहा है फेलियर, मतलब जो स्विंग फॉर्म हो रहा होगा वो फेल हुआ होगा क्रिएट करने में, राइट? सो दैट्स व्हाई वी सेइंग failure swing basically. Okay, a failure swing is the swing that failed to grab last low when bullish. अगर हम लोग बाय प्रोग्राम देख रहे हैं, ओके, अगर हम लोग बुलिश मूव देख रहे हैं, तो जो लेफ्ट साइड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट कुछ इस टाइप से फॉर एग्जांपल आया होगा, ठीक है? एंड लेट्स सी हम लोग हायर टाइम फ्रेम लेवल हम लोग हिट किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक हायर टाइम फ्रेम लेवल था, कोई की लेवल था, हम लोग यहाँ पे हिट किए. सो अगर हम लोग bullish है, okay, we want to see failure swing that failed to grab last low. Okay, जैसे मान लो यहाँ से भी हम लोग bullish सेटअप देखने वाले हैं फॉर एग्जांपल. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी वांट टू सी कि मार्केट जो लो फॉर्म कर रहा था, फॉर एग्जांपल इस टाइप से मार्केट आ रहा है. ओके, तो इट्स फेलिंग टू ग्रैब ओल्ड लो. ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओल्ड लो यहाँ पे ये है, तो ये जो हाई है ये प्रीवियस लो को ग्रैब नहीं किया, तो वी वांट टू सी दिस फेलियर स्विंग, ताकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म करे. ओके, फेलियर स्विंग इज नथिंग, इट्स इज इक्वल टू आई से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. ट्रेंड लाइन तो सबको पता होगा, राइट? अगर नहीं पता होगा तो मेरे को बताना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में.
ठीक है। सो फेलियर स्विंग इज नथिंग, इट्स इक्वल टू ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जैसे ट्रेंड लाइन में मार्केट कैसा, ट्रेंड लाइन जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ टाइप से मूव किया है, तो दिस इज ट्रेंड लाइन, राइट। सो दिस इज आवर लिक्विडिटी, हम लोग लिक्विडिटी कंसेप्ट में डिस्कस किए थे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे सेल का देख रहा हूँ तो वी वांट टू सी सम लिक्विडिटी रेस्टिंग ऑन अपोजिट साइड, ताकि हम लोग उसको टारगेट कर सकें बेसिकली, अगर सेल प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर वही चीज बाय प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग, तो वी वांट टू सी लिक्विडिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यू कैन सी, सो वी कैन टारगेट दैट। ओके, so I hope this is clear. A failure swing is nothing. It's the swing that failed to grab last low when bullish and failed to grab high when bearish. If you're looking for bearish, we want to see failure swing on left that failed to grab high basically. Okay. So उस वही है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एक ही चीज है। सो bearish failure swing is the high that fails to take out the previous high. We want to see this form when we are bullish. Okay, so you can write this point. If if we are bullish, okay, let's say again I'll say if I'm looking for bullish move from this price action, let's say from this area I'm looking for bullish move. Okay, we want to see failure swing that fails to take out the previous high. So let's say मार्केट कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, लेट्स से ये की लेवल टैप किए हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो की लेवल है हम यहाँ पे टैप किए एंड यहाँ से हम लोग बुलिश मूव देख रहे हैं फॉर एग्जांपल। सो वी वांट टू सी फेलियर स्विंग, वी वांट टू सी दिस फॉर्म व्हेन वी आर बुलिश। ओके, सो यू कैन सी ये सब जो हाई था, फॉर एग्जांपल ये सब जो हाई मार्केट फॉर्म किया है, मार्केट ये सब हाई ग्रैब नहीं किया है। एंड हम लोग डिस्कस किए थे कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करता है, अबव ओल्ड हाई स्विंग हाई, राइट। सो वी वांट टू सी दिस टाइप ऑफ थिंग हैपन, ताकि अगर हम लोग बुलिश हैं तो मार्केट इजिली ये सब जो लिक्विडिटी है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, वी कैन टारगेट दैट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। And the second point we have basically same opposite, a bullish failure swing is a low that fails to take out the previous low. We want to see this form when bearish. Okay, we want to see this form on the opposing side of the structure. अगर हम लोग bearish हैं, अगर हम bearish हैं तो हम लोग bullish side failure swing देखना पसंद करेंगे। अगर हम लोग bullish हैं तो हम लोग bearish side basically failure swing देखना पसंद करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में और अच्छे से आएगा, so don't worry. Okay, so you can see this chart, for example, you can see we hit this discount level. Okay, let's say we have, for example, let's say just example purpose, let's say this is, for example, daily fair value gap. Okay, okay, let's say we hit this daily fair value gap. Okay, इससे पहले मेरे को एक और चीज समझाना, let me come to trading view. Okay, so if you see, okay, let's say for example, this is our some key level. Okay, let's say this is for example purpose. Let's say this is a daily bullish fair value gap. Okay, and let's say we hit this daily bullish fair value gap here. And let's say ये जो each candle है, each candle represent daily time frame. For example, okay, each candle represent daily time frame. So once we hit this key level, okay, let's say ये दो bearish candle trade where last, for example, I am saying, okay, we hit this daily bullish value gap, and here we can see basically last two candle, for example. So we're going to use time frame alignment. So we know अगर हम लोग daily level hit किए हैं, okay, we know you can use other time frame alignment as well, but let यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप हिट किए हैं, तो फ्रॉम डेली वी विल गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, सो ये जो डेली कैंडल देख रहे हो, जो दो डेली कैंडल, अगर इसी को मैं 1 आवर में देखूंगा तो काफी सारा कैंडल मेरे को दिखेगा, राइट। अगर यही दो कैंडल को मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मे बी मेरे को मार्केट कुछ इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल दिखेगा, काफी सारा मतलब कैंडल दिखेगा ना, राइट। सो इट विल कम समथिंग लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 आवर, राइट। सो जो फेलियर स्विंग है वो हम लोग जो सेकंड टाइम है ना, उसमें हम लोग देखना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स हम लोग डेली लेवल हिट किए फॉर एग्जांपल, एंड 1 आवर में फिर हम लोग शिफ्ट किए, लेट्स ये 1 आवर का प्राइस एक्शन है फॉर एग्जांपल। सो 1 आवर में वी विल लाइक टू सी दिस फेलियर स्विंग काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बेसिकली। ओके, काइंड ऑफ दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऑन 1 आवर। ठीक है, सो अगर डेली लेवल हिट किए हैं तो वी वांट टू सी फेलियर स्विंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर वीकली लेट्स से ये वीकली फेयर वैल्यू गैप होता है तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में फेलियर स्विंग देखते हैं। ठीक है, आई विल शो यू एग्जांपल, सो डोंट वरी, लेट्स कम बैक टू दिस, सॉरी नॉट दिस, दिस वन। Okay, so let's say we hit this discount level. Okay, so we hit this discount level for example, and let's say again, for example, I'm saying, let's say this is a discount daily fair value gap, for example. Okay, daily FVG.
ओके। सो ये जो मूव है, ये जो एरो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये जो एरो देख रहे हो डाउन साइड, लेट्स से दिस इज बेसिकली, दिस बेयरिश मूव इज बेसिकली लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, 1 आवर में मार्केट कुछ इस टाइप से आ रहा था, लेकिन मे बी डेली कैंडल में सिर्फ 2 कैंडल हो या 3 कैंडल हो, ओके, मे बी सिर्फ डेली में लेट्स से कुछ इस टाइप से मार्केट आया होगा। बट यही चीज अगर मैं डेली से 1 आवर में देख रहा हूँ, तो 1 आवर में कुछ इस टाइप से प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। So now here we're going to look for the bullish move, and let's say we have this draw on liquidity for target. Let's say we hit this daily bullish fair value gap, and let's say here we have, for example, external target. Okay, external range liquidity target. Okay, so from daily fair value gap, okay, we're looking for bullish move. We're looking for market maker model basically, right? We're looking for market to trade higher. We're looking for the bullish move. So that's why we will call this market maker buy model. So if you're looking for the bullish move, if you're looking for the bullish move, we want to see failure swing on the left. You can see here, we have created this trend line liquidity, this equal low kind of. Here we have this liquidity. So basically, this last high is failing to grab old high. Basically, you can see this high failed to grab this high. Okay, so we want to see this type of thing. Okay, kind of trend line liquidity, simple up. See, you don't have to go and see every high basically, you just have to understand कि क्या मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं, क्या मार्केट को, you don't have to see like ये हाई प्रीवियस हाई को ग्रैब किया है कि नहीं किया, you don't have to see everything, okay, you just have to understand, okay, we hit this daily fair value gap, we know कि we have this external target for example here, and on 1 hour time frame I can see we have kind of trend line liquidity forming. So if you're looking for buy program, this is the liquidity that we have, so market can target this liquidity, right? क्योंकि तुम खुद समझो, अगर मार्केट इस एरिया से बाउंस करने वाला है, फॉर एग्जांपल इस एरिया से मार्केट बुलिश होने वाला है, तो वी नीड सम लिक्विडिटी, राइट? वी नीड सम लिक्विडिटी फॉर टारगेट. You can see we creating this trend line liquidity kind of, so we can target that basically. Okay, so you can see this is basically our failure swing. Okay, you can see low resistance liquidity, you can say, okay, or simply say we have this trend line liquidity, right? So a failure swing is a swing that failed to grab last low. So we're looking for bullish. You can see market failed to grab last high basically. Okay. So sorry, यहाँ पे last high होगा. Okay. My mistake, because we're looking for the bullish move. So this will be high basically. A failure swing is a swing that failed to grab last high when bullish and failed to grab low when bearish. Okay. So you can make sure to correct this. Okay. Okay, so let me show you one example. So here you can see are at this daily bearish fair value gap, right? So we're looking for market to internal to basically external this low to trade, right? So we're looking for market to move from daily bearish value gap to this external range liquidity. Okay, and if you see here, we have this daily time frame, right? So from daily, in which time frame we will go? On 1 hour time frame, right? So you can see on daily how it printed only two bullish candle and we tap this basically fair value gap. But अगर यही प्राइस एक्शन को, यही बस प्राइस एक्शन जो यहाँ फॉर्म हुआ है, इसको मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा, तो यू विल सी सो मेनी थिंग बेसिकली. ओके, सो if you see here, we tap this daily fair value gap right here, and can you see this trend line liquidity? Okay, here you can see we have this kind of forming trend line liquidity. So that's what you want to see. Okay, basically a failure swing kind of liquidity. Market is creating liquidity basically. Okay, market is forming some sort of liquidity. Okay, to target. So if I'm going to look for bearish move, we want to see this type of thing basically, ताकि market काफी easily trade करे lower to take out this liquidity, to take out this failure swing basically. Okay, so I hope this is clear. Okay, and if you see, for example, this is the current today's price action by the way. Okay, and you will see how market trading very strongly downside and grabbing all this liquidity. Okay, so what I'll suggest you guys is just go to your own chart and try to look for this. Okay, not always it is going to form something similar this. Okay, sometime you will see
So sometime maybe you will see something like this as well. Okay, let me show you quickly. So sometime, not always you will going to see exact proper like this framework. You will see sometime basically market is trading very strongly downside. Okay, and just on 1 hour also you'll see very strong move to the downside like this, for example. Okay, so let me show you one more example. So let's see this example. So let's say we tap this weekly bullish fair value gap. Okay, and we have this, let's say, external range as a target. So we're looking for internal to external to trade from this bullish fair value gap to this external. So with we're going to use time frame alignment. So from weekly, we will go to 4 hour time frame, right? So on 4 hour time frame, see, we don't have that failure swing, but it's completely okay if we don't have failure swing as well. Okay, it's not something that's very necessary. Okay, you just have to understand, are we at some higher time frame level or not? If we are in higher time frame level, and if we're going to bounce from this weekly fair value gap, what will be our target basically? So we know this is our target as a weekly external range liquidity, right? This is our weekly external range liquidity, a swing high pattern, right? So you don't need always that failure swing, okay? हमेशा इस टाइप का market form नहीं करेगा kind of. Okay, sometime you will see this sharp move, okay, and it's nothing wrong with that, okay? So I hope this is clear. So don't think always you need failure swing. If we have failure swing, it's good because uh, you just have to understand, if we, let's say, if we have something like this, okay, for example, so it's creating nice trend line liquidity, it's creating some liquidity, sort of liquidity, right? Nice liquidity. So if price is going to bounce from this area, we have very it's going to be very strong move. It's going to be very sharp move because we have very strong liquidity as a target, right? So market will grab liquidity very fast. Okay. So I hope this is clear. Failure swing topic. But I'll suggest you guys just go to this my Udemy. Okay. Udemy section. On section 7 you will see one option, one lecture, basically lecture number 33, failure swing, low resistance liquidity and high resistance liquidity. Here in this video you will learn about high resistance liquidity as well. Okay, right now I have covered failure swing, but I'll recommend you guys go and watch this video one more time so you will understand in much better way. Okay,